मैं चलती हूँ निरंतर इस अंतहीन सफर पे। रक्त रंजित रेतीले राह, रक्त आश्रु भीजे निगाह। पर कदम मेरे कब रुके, कब थके, ये है कहाँ। ऐ सूरज तूने भले ही संज्ञा छाया को नकारा है, शीतल इस समुद्र को जैसे चीखों का गर्भ बनाया है। पर कदम चिन्ह मेरे कलम सी फिर भी छाप छोड़े हैं, चट्टानों पर न सही कागज तो और न कोरे हैं। समीर साहिल सलिल मिटा ले तू मेरी छाप को, पर कदम मेरे अक्लांत है, कलम मेरी है अशांत। माँ, माँ, बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। बस कुछ ही दिनों में मेरा पोता और इस घर का चिराग आने वाला है। माँ सोच तो मैं भी यही रहा था, पर एक डर भी है, अगर लड़की हुई तो। शुभ शुभ बोल बेटा। यह मैं और तेरे पिताजी इस वंश को आगे बढ़ाने वाले की राह देख रहे हैं, और एक तुम हो। देखो, तुम्हारे पिताजी मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे और मेरा चेकअप करवाया था। डॉक्टर के कहने पर जब उन्हें यकीन हुआ, तब जाके हमने तुम्हारे जन्म की खुशियां मनाई है। नहीं, लड़की नहीं होगी। आप सही कह रहे हो माँ, लेकिन अब तक मुझे भी तो नहीं पता ना क्या होगा। अरे तो पता लगाओ, और जल्दी, इससे पहले कि देर ना हो जाए। देखो, अगली बार जब डॉक्टर के पास जाओगे तब पूछ लेना और पता लगा के ही लौटना। ठीक है माँ। देखो, हमारे खानदान के लिए कोई कमाने वाला चाहिए, आर्थिक बोझ नहीं। ये बात ध्यान में रखना बेटा तुम। आप फिक्र मत करो माँ, लड़का ही होगा। अग्नि जीवन की प्राणी हूँ मैं, कभी आहुति कभी राख हूँ मैं। कुर्बानी कहो या बलिदान उसे तुम, भिन्न रूपों में समनामी हूँ मैं। हूँ यदि मैं नरक का द्वार फिर, निर्माण किया क्यों तूने मेरा। हटीले बेटे के हटके आगे, क्या भगवान मस्तक झुक गया था तेरा। प्राण पिंजर से आजाद किया क्यों, ए आदम कैद ही जब रखना था। फूका मुझ में क्यों जान तुमने, कुर्बान ही मुझे यदि करना था। हूँ मैं क्या एक वस्तु केवल, आदान प्रदान जिसका तुम करते हो। स्वतंत्र जगत के नेता निवासी,
हमें आज़ाद करने से क्यों डरते हो? गर्भ में एक प्राण है, लेकिन यह कब कहाँ तुमने सोचा है? कन्या हुई तो कष्ट है केवल, जन्म उसे क्या देना है? Various women come to us, requesting or wanting to know how they can have either a male fetus, by which they can actually plan one, or if they are pregnant and they want to decide whether to continue the pregnancy or not, depending on the sex of the baby. So there are two types of people. The first type is the one where they want to select even before they are pregnant. And of course, in the past, there used to be procedures or there used to be methodologies where you separate the sperm into the X sperm and the Y sperm, and you only inseminate the woman with the Y sperm. And that would increase the chances of a woman having a child who was a male child. This testing, what we call the PGD, or the pre-implantation genetic diagnosis, where the diagnosis made before the embryo is implanted, is actually meant for looking for diseases in that embryo, where the disease has been ruled out, and only that, like say if there's a couple where they've been having children constantly with a particular disorder, or there's a family history where there are many people suffering from that disorder, and they do not want to put in an embryo which is affected because of that particular disease continuing in that generation, then you can test that embryo, rule out whether that embryo is having the disease or not, and put in only the normal embryo. But again, that technology is being misused. The second thing is where couples come, they've had two girls and now they want to have a boy, or there are couples who have got two boys and they want to have a girl. So, they want to balance their families. They want to make sure that they have children of both the sexes. And then they demand, or they get pregnant and they say, let's check what it is, because based on that I will decide to continue or not to continue. And then they will, in the past it was done because it was not against the law, and then the couples decided whether they would like to continue or not. But today, since it's against the law, there are many people who are not even aware of it, that it's against the law. They come and happily ask you, and they say that, doc, can you do this for me? And then I asked them, I said, why do you want to do it? I mean, it's something which is against the law, and what's wrong with having two girls? Why do you want a boy? During my investigations, when I have done stories on this, I've realized one thing, that even the companies which produce ultrasound machines are, giving it at a very on loan basis, and the doctor has to pay it up. And all these things are, maybe pressurizing the doctor also to go ahead and do a illegal sex determination. Now, why is one of the reasons? Why would a doctor go ahead and do it? It is just my personal view that, radiologist, I'm just corroborating two facts. That radiologist, the seat of a radiologist, like after doing your MBBS and doing your post-graduation, when you go to study radiology as a field in medicine, they have to pay like a crore or a more than crore to just get a seat in a private hospital. So if you're paying 1.5 crore to just get a seat of radiology, I'm sure you want that money back. You want that money really, really bad. And therefore, obviously, because you paid so much there, you want to reap it faster, and when you want to reap it faster, obviously you're going to do something wrong. मुबारक हो, आपको लड़की होने वाली। तो ये जो लड़कियों का घटता हुआ लिंग अनुपात है, जिसे हम कहते हैं कि डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसको रोकने के लिए अपने देश में बहुत ही सुंदर कानून है, जिसे कहते हैं कि PCPNDT एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, विच पूरा एक जितने भी सोनोग्राफी सेंटर्स है, जेनेटिक काउंसलिंग लैब्स है, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स है, उन सबको कानून के दायरे में लाता है। पूरा इनका जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करने के लिए एक रेगुलेटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम को तय करता है। और अगर कोई कानून का हनन कर रहा है, ब्रीच कर रहा है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लिंग का जांच और चयन करके इलीगल अबॉर्शन के लिए मदद कर रहा है, तो उसको पकड़ता है। करने वाले डॉक्टर को 3 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना है। कराने वाले को 3 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना है। डॉक्टर को 5 साल तक डॉक्टरी उसकी खारिज कर दी जाएगी अगर वो पकड़ा जाएगा और उसको कन्विक्शन होता है तो ये पूरा जो मुद्दा है, इसमें जिसके साथ में ये पूरा प्रोसीजर होगा या पूरी प्रक्रिया जिसके शरीर पर होगी,
वो जो गर्भवती महिला है उसको कानून ने एग्जम्पशन दिया है, क्योंकि इस देश की औरत अपना पंतप्रधान कौन हो ये तय कर सकती है, लेकिन इस देश की औरत अपना बच्चा कितना हो कितने ना हो, अपना कॉन्ट्रासेप्शन क्या इस्तेमाल करे वो तय नहीं कर सकती। उसको बच्चा शादी इसलिए होता है क्योंकि एक वंश को दिया देना या एक लड़का पैदा करने के लिए है, या अपना देश में शादियां बनाई जाती है। उसकी वजह से इस कानून ने सोच समझकर औरत को एग्जम्पशन दिया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग महाराष्ट्र में 36 डेकॉय केसेस यानी स्टिंग ऑपरेशन किए हैं, जिसमें करीबन 60 डॉक्टरों के खिलाफ में महाराष्ट्र के अलग अलग कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं। उसमें से 4 केसेस में डॉक्टर को रिगरस इम्प्रिजनमेंट, मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो जिसके बारे में सेंटेंस हुआ है, जिसको कोर्ट ने तय किया है, वो है 39 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट and 1,30,000 रुपीज फाईन। डॉक्टरना आम्ही सांगितलं की आम्हाला मुलगा मुलगी चेक करायची म्हणून, तर ते म्हटले की पहिल्यांदा म्हटले बरं तर पैसे लागतील म्हटले। आम्ही म्हणले जितके पैसे लागतील तितके आम्ही देतो, आम्हाला मुलगा किंवा मुलगी काय आहे ते आम्हाला सांगा। तर ते म्हटले बरं चालेल सांगतो, आणि त्यांनी 2,000 रुपये आम्हाला सांगितले की 2,000 रुपये लागतील म्हणून। बरं म्हटले आणि गेलो, सोनोग्राफी केली त्यांनी। ती 4.5 महिन्याची गरोदर होती महिला, जी देवकाकेस नेली 4.5 महिन्याची गरोदर होती। त्यांनी चेक केलं, मुलगी आहे म्हणून असं सांगितलं। मुलगी आहे म्हटल्यानंतर सांगितलं, नंतर त्यांना आम्ही ते 2,000 रुपये दिले। त्या 2,000 रुपये ज्या नोटा दिलेल्या त्याचे आम्ही अगोदर नंबर नोट केलेले होते अगोदर आमच्याकडे, त्यांना दिले। ते म्हटले की जर हे गर्भ खाली करायचं असले तर इथंच करा, बाहेर कुठं जाऊ नका, मी तुम्हाला कन्सेशन देईन। मग आम्ही म्हणलं विचार करून येतो आम्ही परत। मग आम्ही आलो तिथून बाहेर आल्यानंतर डॉक्टर सिव्हिल सर्जन म्हणजे तिथले सिव्हिल सर्जन आणि वर्षाताई आतमध्ये गेले। तो पहिल्यांदा म्हटला नाहीच मी केलेलं नाही। आम्ही आमच्याबरोबर छोटा टेप नेलेला, तो तिथं दाखवला आणि नोटा त्याच्याकडे ज्या सापडल्या त्याच्यावरच्या नोटा नंबर हे त्यांनी आम्ही बघितल्या तर त्याच होत्या। मग तिथं तो सापडला, मग तो तिथं गया रडू लागला, मी म्हणजे माफी मागतो हे करतो असं म्हटलं। पण तिथं काही वर्षाताईने नंतर त्यांचं ते कारवाई सुरू केली। एक माणूस आला आमच्या इकडे आणि माझा मुलगा नव्हता घरी, तो गेला होता बालाजीला, आणि हा मुलगी माझी एकटीच होती घरामध्ये, आणि तो म्हणाला तुम्हाला 1,00,000 रुपये देतो, तुम्ही माझ्याबरोबर चला। म्हणजे असं जबरदस्तीने नेलं आम्हाला, माझी मुलगी कुठे एकटी पाठवू म्हणून। मी काय केलं, माझ्या सुनेला घेऊन, माझी 2 लहान बाळं घेऊन तिच्याबरोबर मी गेले। गेल्यानंतर त्यांनी आम्हाला 1,00,000 रुपये 25,000 रुपये घरी दिलं होतं। घरी दिलं आणि तिथं 75,000 रुपये शिराळमध्ये दिलं, आणि तो काही म्हणाला तुम्ही केस तुम्ही बदलून बोला, वर्षा देशपांड्यासारखी बोलू नका। There is a network of people who are telling them to go there, and these guys are not doctors. Come on, you don't need to be a doctor to know what kind of what is the sex of the fetus. It is just if you know the technique, if you know how to get it done, they just learn that much, and that is their bread and butter. सब आप बेहोश हो गए। आप उसको घर में लाते रहे तो होता क्या हो रहा है? लड़की के बेड में। An abortion is a process by which you can remove or terminate a pregnancy in a woman who has conceived but is not interested in continuing the pregnancy. Now, this pregnancy may have occurred either because she has not used a contraceptive, or she has used a contraceptive which hasn't worked, or she has no knowledge of what to use, or which, I mean, as a matter of fact, that we find very often. Or it could be because she's been sexually abused, she's been raped, and she was not prepared for it. Or it can be that a woman who's physically or mentally disabled, and she has been sort of, she feels, or she's medically ill, for which she feels that the pregnancy should not continue because it would harm her health.
In India, abortions are legal till 20 weeks of pregnancy. Beyond 20 weeks of pregnancy, it's not legal. India has legalized abortion, and it has been the second country in the world which has legalized abortion, and that has reduced the risk of women dying of unsafe abortion. This is something which is violating the basic human rights of somebody, which I think any woman should not tolerate. You know, however well-to-do her husband may be, however good he may be, however nice he may be to her otherwise, however much she needs him, however much she needs that family, I think no woman in a marriage should ever tolerate violence done to her, because it is something which I think, you know, destroys the basic human nature of probably what we say, the basic human freedom is sort of restricted, you know, when you hit someone, when you torture someone. So that is something which should not at all be tolerated. And apart from the trauma, it's, as I said, it's a crime basically to do it, you know. It shouldn't be tolerated, and women should definitely rise against it. We see domestic violence even in the better class of society, and there are many women who somehow accept it, thinking that okay, it will be better the next time. Even though they are educated, even though they are financially independent, they just take it to make their marriage work. So it happens sometimes that, you know, they just try to hope and pray that, you know, things will get better, and then somehow they just don't get better. So that is one class of people where women, though they are educated, will accept it, hoping that they will not, they do not want to break the marriage. They want to try and help it to retain itself, and they keep hoping against hope that things would change. But at the same time, domestic violence normally occurs, or it's, if you talk to women in the rural areas, I mean, if you talk to them, you feel they think that it's the right of the man to hit them. So when you talk to them, they say, oh, I can't blame my man, you know, my man, they say, I only did this wrong. So naturally he'll beat me up. For them, it's natural to be beaten up. They don't think there's anything wrong in it. Because, you see, I always feel that education starts at home. If a young child sees his father beating up his mother, or abusing her verbally, or dealing with her in a very arrogant way, he will think that's the way it should be. And those men turn to do the same thing to their wives. Prior to birth, हमारे देश की लड़कियां are losing their human rights. It's a child right abolition, और ये सबके खिलाफ में, और सबसे अहम कि it's a domestic violence. जन्म से पहले माँ और बेटी के साथ में होने वाला डिस्क्रिमिनेशन और हिंसा, इन दोनों चीज़ों का ये मुद्दा है, और इस मुद्दे को हमें गंभीरता से लेना है, और इस मुद्दे को बदलने के लिए आगे का जनरेशन ही काम कर सकता है. माँ,
माँ हमेशा कहती थी, एक लड़की के लिए जीवन का दूसरा नाम संघर्ष और समझौता है। उम्र ज़्यादा नहीं थी, जिम्मेदारियाँ और भी कम। बात कुछ सही नहीं लगी। जैसे जैसे जिंदगी का सफ़र बढ़ता गया, समझ आया कि मेरे अस्तित्व का परिचय इन 2 शब्दों से होने लगा है। जीवन में मुझसे गलतियाँ हुई है, हर इंसान से होती है, पर मैंने आज तक दिल से किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों? सुना था भगवान के द्वार पे देर होती है, अंधेर नहीं। इस बार कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। शादी के बाद मेरे जीवन के मायने बदल गए। मैंने पूरी कोशिश की कि अपने नए घर को अपना सकूं। कुछ देर के लिए लगा शायद सफल हो रही हूँ। अब सोचती हूँ तो लगता है खुद को दिलासा दे रही हूँ। माँ बनने के एहसास जैसा दूसरा कोई नहीं। सोचती हूँ कि मेरे भीतर एक नया जीवन पनप रहा है, तो एक अजीब सी खुशी, सुकून और जिम्मेदारी का एहसास होता है। फिर सोचती हूँ कि इस जिम्मेदारी को अकेले संभालना है, तो डर लगता है, नहीं, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। जिस लड़की ने अब तक इस दुनिया में अपनी आंखें नहीं खोली, उसे मेरे जीवन साथी ने अपनाने से साफ इनकार कर दिया है। दूसरों से अब क्या उम्मीद करूं? सब चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी को मार डालूं। कोई नहीं सोचता उसके बाद मैं कैसे जीऊंगी, अपने आप से नजरें कैसे मिलाऊंगी। नहीं, इस बार समझौता नहीं होता। और संघर्ष करने की ताकत कहाँ से लाऊं? We are dealing with a genocide where the medical profession is making over 1,000 crores in the country by determining the sex and eliminating the girl. We know the only way to stop sex selection in our country is to make doctors pay for their medical crimes. Any other way of trying to make the girl valuable by trying to focus on the victims, on the families, will not help. We have lost millions of girls over the last decade by not implementing the law, and we are heading towards, in the coming decade, 1 million girls being lost every year. So during the ultrasound, every ultrasoundist should legally tell the parents what is the sex of the fetus, and it should be officially registered. Now once we do this, we know exactly how many female fetuses are actually being conceived. Once we do that, then we know what is the actual ratio of male and female fetuses, and then we'll know the actual degree of the problem. How many female fetuses are we actually losing? Education, because with education the economic power of earning money grows a little better. The girls are independent, they are not a burden on their families or their parents. They can contribute to the family income. They get more independent in their thought. They are then able to say no to certain issues. One's not propagating dissension between families, but you have a mind of your own. You can think for yourself. And there have been examples where they've been able to convert and change the mindset of the older generation to make them think in a more balanced, modern way of thinking. So education plays a very important part. Now, because it's education, the government has to come in. And even the government is fairly aware of it, but not enough is being done. I think giving dignity to a woman, making her feel proud of herself, making her feel capable of herself, making her not feel like a burden to the society or to the family, making her feel wanted, nurturing her, it's so important. So I think if we do all that, and at every level, it will happen. The only way I think the solution would just be, you don't bend down to the pressure. As a woman, as a man stand up for your wife, the wife has to stand up for her own self. And if you can't, just call up a helpline which the state health department has made. It's just not, you can call up NGOs, there are helplines, but we're just not aware about this. And therefore people should call up helplines. The state health department has a 11-digit helpline. They're trying to make it 3-digit for more awareness on the same.
when it comes to awareness, I would like to ask a question to all the people sitting in the auditorium, that do you have, on Facebook, have you ever liked a page called Save the Girl Child? Have you ever tweeted something about the girl child? Have you ever went on the websites that the State Health Department has made about the PCPNDT helpline? We all log on, we all spend like what, maybe an hour, 2 hours, 3 hours on the internet, but we don't do that. Probably because it does not affect us. Anything that affects us, we're going to do it. But that's why awareness is not something which I can come and put it in your mouth and say, you have to know that you have to save the girl child. No. Awareness is something which is going to consistently come, and people have to understand. Unfortunately, we have not made an impact in terms of ensuring that less girls are eliminated today. And we hope that your generation will be more successful in creating a different India where girls are welcome. जीवन का जो मूल्य है ऐ समाज वह अतुल्य है। पुरुष नारी का मेल है वह शिशु प्राण जो अमूल्य है। समय है बदला, सदी भी बदली, आज भी क्या तुम पिछड़े हो? मानव जाति क्या होगा तुम्हारा जब मानवता से ही बिछड़े हो? रुदन फैला क्यों चारों ओर, नारी का यदि हुआ है जन्म, ना ढोल ना नगाड़ों का शोर, केवल जननी की आंखों में शर्म। जीवन का वश किया है किसने, वह तो बंद मुट्ठी में रेत सी है। जितना ही तुम कस के जकड़ो, फिसल कर बहती जाती है। किंतु उस लज्जा का कर नाश, भेंट मिली थी मुझको श्वास। गर्भ से अपने गर्भ में सींचा, जन्म से पूर्व न बनी मैं लाश। संसार समाज और भय त्याग उसने, प्राण दिया था मुझको है जिसने। हर नारी रखे मस्तक ऊंचा, बने ऐसी ही माँ सब काश।